Hello and welcome to our session. So our session on today is the main important question. So what should be the rules for swing BTST positional? The previous rules are now older, much older. Currently, market dimensions and the view changes over time to time. So same thing is happening currently. Our rules are now 6 months to 8 months old or near about a year old. So I decide to change the rules and guide you about some things because I am receiving a lot of queries and what is the target, sir? How should we hold, exit? So all the queries also will be get resolved today. I expected maximum presence, but seeing that very less people are interested in learning or understanding something. Yeah, today is Sunday. They may have, or they may be enjoying or doing anything less. So let's start there. Types of trade. What are the types of trade? There are four types of trades we provide in our group. First one is swing. Second is BTST, positional and multi-bagger. So what should you expect? You should always expect that whenever I say it is a swing, you should expect time frame should be from 3 days holding to 3 weeks holding. Max to max 3 weeks holding. You can expect that max to max we may hold that stock for 3 weeks. So expected return is 8 to 20%. Okay. So let me show it on chart also. Understand if tomorrow I tell you, so place a GTT buy order for Paras defense. Our stop loss is always 7%, max 7%. So what should be our reward then? If we are taking 7% stop loss, our reward should be 1 is to 3, 21% minimum target. So understand this. If I told you to enter at 860 level, then our stop loss would be 790 or 780 levels. But I never give this big stop loss. I always prefer to take stop loss to 3 to 4% only. Okay. But many times, this cannot happen. We may need to understand this that if we are taking positional trade, then we will take 7% stop loss. If we are taking swing trade, then 4% minimum. And from now on, what I said that our entries will be limited to such an extent that we will provide high accurate trade, nearly 90% accuracy trades. Out of 10, 9 trades must go in our favor. Or we have made some rules. After taking entries, if stock doesn't perform, if it has given 8 or 6%, 8 or more than 5% more, and again it is coming to cost, then we will exit at cost. We will not wait for stop loss. Those who are waiting or those who are not following the rules, the liability for theirs only. So what are the swing trading rules? It is advised to take all the trades. Some people from group I am observing that they are taking entries on themselves. They are not taking all the entries. If you are following any group, my group or any group, you must take all the trades given in that group. After that, you can only benefit. If I am saying my accuracy is 90%, let's suppose you are only taking one or two trade a month. So if you are taking only two trade, then there is a possibility that no, you may end up having accuracy of 50%. Why? You are just only taken two entries and one has its stop loss and one has its target. And you will say, no, your accuracy is less. That's why I am asking you to take all the stocks given. Likely we are limiting quite 3 to 4. And many times we also tell about exits. So understand these things. Exit don't work as per and no one knows the right exit also. So that's why I'm advising you that take all the trades and after that, if you find that it's not working, tell me. And don't ask for stop loss. Understand.
Stop loss is maximum 7% from your entry point. And from now onwards, we will be taking pre-planned entry. Means that chart for entry of any stock will be shared before actual entry. I will give live market entry, but there will be two forms of entry. One will be in GTT order, one will be live market entry. But GTT also will trigger in live market. But the reality is that we will pre-plan the entry. The from here onwards, no entry will be taken in hurry position or in live market running. It will be all entries will be pre-planned, result, fundamental, technically, and already we have studied the stock. So it is advised to be active at 9:15 to 9:30. Most of our entries will be on 9:15 to 9:30 because that's the time where it will the many of the or most of the stock gives big momentum. That's why you should always be active at 9:15 to 9:30. Okay. We will maintain swing BTST positional portfolio in one account. And another advice for you. You should always have two accounts, two demat accounts. One account should be used for swing BTST and positional, and one for multi-baggers. In the multi-baggers or long-term stock account should be different from your swing account to track better returns to to be better accountable. That's why I'm asking you or I am advising you. It's your choice still. You should allocate two accounts, one demat account for multi-baggers and one demat account for swing, BTST, and positional trades. So after this comes positional rules, but I will switch to BTST rules now. So understand, till now we were taking BTST at any time. My favorite time is 2 to 3, but we were taking enters at 11 also. But from now onwards, the rules has been changed. Rules for BTST has been changed totally. BTST entry will be given on 2 after 2 p.m. to market ending 3:30. We can give any time entry to BTST. Okay? Hope you understand. And BTST means buy today and sell tomorrow. So again, understand if BTST goes in our favor and gives a good move, gives a more than 4% move, then you can expect a more upside and you can hold for positional and stop loss for that BTST script as it given more than 2 or 3% more is cost to cost basis at your entry price. Okay, most of the BTST stocks are momentum picks. So what is the meaning of BTST? You buy when the market is ending at 3 p.m. and you sell when the market is at opening in the first hour. Means 9:15 to 10:15. You must exit before 10 a.m. You must. But obviously it's choice. If you are taking a good profit 3-4% and you think that it will go up again, so you may hold with stop loss of cost to cost. Exit at cost, but don't take loss. Either you will take profit or either you will exit at cost. You will not take the loss. Understand this. And taking BTST, all the BTST is most important. BTST may perform today or may not perform tomorrow. That's why I understand. Every day taking BTST is must. You should allocate your 20% capital. Again, I am saying, listen carefully. You should allocate 15 to 20% capital for only for BTST. Even and also you can take two BTST. One is paid group, one paid group, and one free group. You can allocate 50% capital to these two BTST. Okay? And understand, no exit is perfect. A person A can exit a BTST stock at 2% profit, and a person B can exit BTST at 1% loss. It's just a matter of time. Understand, BTST rules are defined here. You should take the trade, you should exit in the first hour, mostly try. And understand, if the BTST stop loss is not given, that means that the stop loss should be
4% max, but you should not wait for 4%. You should always keep the stop loss of previous candles 50% low. Understand this. Previous candle 50% low or previous candle low. How you should understand that? Let me tell you with the help of chart. Understand, if I have given BTST DOMs at exactly 3 p.m. 3 p.m. it was at 1500. I will mark this level. 1505. Okay. So if you have taken the entry here, so what should be your stop loss? The base stop loss for this is this candle, the entry candle or the candle at which we are taking entry. It is the daily time frame. The low of that candle means previous day low or that day low of which we are taking the entry. Or if you want to be safer at side, you should always keep 50% of this candle. If this candle is 3%, 2%, so you should always keep 50% of this candle as a stop loss. Okay. Okay, first hour if you have exited, you may have been ending in a good profit, and avoid converting BTST in more than more than 3 days holding. And they understand if, like say, Patel Engineering, some days before we take an entry. Understand, if we take an entry here in the first hour initially, you may be in the profit. I have given entry at 74, and actually at that day only it has made 79 high. But many couldn't book, even I couldn't book. We were waiting for BTST. At BTST it also has given 2%, 3% more, but we have not booked. We were thinking that it may give more move. But what should be the ideal stop loss? 50% or the candle low. The both the cases it has hit the stop loss. Whenever you decided that you will not follow the stop loss and you will not book the loss, you will end up having holding that stock for longer term like this. Now you are holding from 1 to 3 days. Now it may again go sideways like this, may again form one green candle, again red, again one green, and take a week or 2 weeks. After that, it may give breakout. So what you are doing, you are wasting your time. You are wasting your time and you have a limited capital. So your capital is stuck. If you have followed the rules and exited at 1 or 2% stop, or as per the rules which I am mentioning you, if you have exited at that stop, then that would have not been the issue. आपको वो 2 हफ्ते के लिए होल्ड करना नहीं पड़ता था अगर आपने राइट टाइम पे एग्जिट ले लिया होता. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू follow stop loss, follow the rules. If you don't follow the rules, you will not be a consistent profitable trader or consistent profitable investor. Hope you are getting my point. So the second part of swing trading rules. So from now onwards, we will have 4 monthly sessions. On Saturday or Sunday, I will take a session and update you on the next week stocks. Which stocks on my radar, which stocks I pre-planned for next weeks. And we'll only take that entries. We will not run on any stock. We will not run on any news on the basis. We will be a firm on our entries, especially regarding the major. It will be combination of most of the or most or all the entries will be operator based entry, where we spot the sector is positive, news is positive, and overall market conditions are positive. After that, we analyze and uh, have a list of positive stocks which may give good upside momentum in coming time. We will track them and we will enter in them only. And please uh, give uh, sorry, 1 minute. Huh. And again, we will try to take accuracy level to 100% soon, fully 100%. There will be no stop loss hit.
with our one analysis point. One we think we will exit at cost, but we will not take any stock. We will exit at cost. How? Because we have one operator strategy that after our entry, stock will suddenly bounce. Suddenly bounce. There will be sudden bounce in the stock after our entry. But one thing you have to clear: if stock suddenly doesn't last and or only give 5 to 6% more, then initially you can directly put stop loss to at cost. And don't ask me, sir, I have not exited at cost, sir, what should I do? So then follow the rules, follow the 4% or 7% formula of stop loss. And it is any circumstance, at any circumstance, we are not responsible for anything, even your loss or even your profit. But understand, swing is swing, positional is positional, and multi-bagger are multi-bagger. Don't hold multi-bagger stock for swing trading. Don't hold swing trading swing stocks for multi-bagger. Don't change your mind by yourself. Understand the rules are for following. If you don't adhere to rules, then you will not able to succeed in the market. For succession in the market, you should always adhere to the rules. Rules are quite simple, easy to understand. I have made these rules for anybody, even child can also understand these rules. These rules are quite simple. Understand, if I have given a swing stock, then the target should be 8 to 20%. If you are deploying 1 lakh capital, 8,000 to 20,000 should be your profit in swing stock. If you are deploying 50,000 to Btst trade and if you are getting 2 to 20%, you can exit. Understand this thing. Positional, you should minimum take 20%, but positional time frame. So I think I should let me put the time frame. Time frame will be here 2 to 3 weeks. 3 week. Mostly 1 week. One week will be swing trading. But let me 1 to 3 week. Let me do this. 1 to 3 week. As it goes above 3 week, and BTST is only 1 day. And what should be the time frame for positional? Whenever we go more than 3 week time frame, that will be positional stop. More than 3 week. Multi-baggers, they don't have limit. More than 3 week to 2 months, that will be positional. And multi-baggers have no limit. Multi-baggers can take time up to 1 year. But minimum 60% returns are expected. You can exit and maximum there are no limits. Some stocks like Jai Balaji are 18x now. Some stocks like Sahana system has given 1000% return in just 3 months. So there are no limit. Even the multi-bagger list which I have shared at 27 January, that multi-bagger stock portfolio, if you would have invested, that stocks have yielded 100% return in just 12 days. Just 12 days, that stocks have yielded 100% return, more than 100% return. At every one stock has given minimum 7% return. So multi-bagger are research-based, fundamental and technically monthly breakout stock with stage 2 stocks and a sector, and the news are the most important thing. The sector is positive. Means the future perspective sector. We always try to give the best whichever we can. So what are the positional rules? Positional stock time frame is more than 3 weeks to 2 months. Here you should allocate capital wisely according to your stop loss. अब पोजिशनल में क्या होगा, अगर अंडरस्टैंड, अगर मुझे पटेल इंजीनियरिंग पोजिशनल में देना है तो क्या होगा? अगर देखा जाए पोजिशनल में, अभी देखो ये मेरे पास एंट्री बन रही है पोजिशनल में, पटेल इंजीनियरिंग का बेस देखो, पटेल इंजीनियरिंग बेस इज वेरी गुड। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ रहा है, हमने एंट्री इसी पॉइंट पे ले ली। ओके, स्टॉप लॉस क्या होगा? आइडियल स्टॉप लॉस शुड बी हियर। स्टॉप लॉस कितना है हमारा? इतना है। टारगेट कितना होगा? 3x। लेट मी ये रिमूव करने दो मुझे, इसको मैं लिख देता हूँ।
दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। एंट्री लेते ही तुरंत ऊपर चला गया, बट अगेन केम टू आवर कॉस्ट, सो इट शुड बी अ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। वन रूल, एक रूल आपको अगर लॉस लेना ही नहीं है, 90% स्टॉक हमारे एंट्री के बाद ऊपर ही जाना चाहिए, टारगेट हिट करना चाहिए। अगर टारगेट नहीं हिट करते तो कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर 5% का मुंह देने के बाद अगर नीचे आ जा रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज पोजिशनल में आप रख सकते हो। पोजिशनल का स्टॉप लॉस एक नियरेस्ट स्विंग लो होगा। नियरेस्ट स्विंग लो क्या है? 58। ये बहुत कम चांसेस है और इट इज वेरी लेस लाइकली दैट दिस स्टॉप लॉस विल हिट, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 20% to 50% return here. Minimum 50% return here in positional. What should be the minimal 50%? 30 to 40%. Sorry, 20 to more than 20%. 20 to 50% आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न, अगर ये स्टॉप लॉस लेके चलते हो। देखो जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना होगा। इवन अगर इसका रिस्क देखो कितना है, 69 पे आपने ले लिया, 11 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 11 रुपीज स्टॉप लॉस। If you have taken 11,000 quantities, 11,000 is your risk, and the profit which you are getting, let me put it this into risk to reward ratio. कितना कैपिटल अलोकेट करना चाहिए इसमें? कैपिटल अलोकेशन शुड बी ऑलवेज, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर रिस्क अलोकेशन। अगर रिस्क इतना बड़ा है तो कैपिटल कितना होगा? इट विल टेक मिनिमम 3 weeks to 2 months फॉर अटेंडिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। चलो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इफ वी सी दिस दैट हेयर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 2.86, 1:2.86, मीन्स 1:3 नियर बाय। यहाँ पे 17% का रिस्क बन रहा है। तो हाउ मच कैपिटल यू कैन allocate? If we see here, let me put text box here. If you allocate 1 lakh capital, what is our risk? 17%. That means 17,000. And what is our reward? 50%. That means 50,000. 2 months, 3 months. ओके, आपने 1 लाख कैपिटल अलोकेट किया, इसमें 17% का आपका रिस्क है। एज पर रूल क्या बोलते हैं? पोजिशनल के लिए सभी के लिए 7% का हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है यहाँ से। वेन एवर वी विल टेक एंट्री, 90% ऑफ द टाइम्स आई विल मेक श्योर दैट टू गिव the stock will initially blast 4 to 5% upside after our entry. We will try our best. If not, then our stop loss will be directly 4% to 7%. Whenever you are holding for more than longer period of 1 month, actually you should allocate capital like this. If you want to lower your risk, what you can do, you can just keep this at low. Let me remove this and let me edit this. हाँ, इफ यू कैन लोअर योर पोजीशन रहेंगे। आपको अगर 17,000 के लिए मिलेगा, आप 50,000 कैपिटल डालो, आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। 8,500 का आपका रिस्क होगा, 25,000 का आपको प्रॉफिट होगा। 8,500 का रिस्क होगा, आपका 25,000 का प्रॉफिट होगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर आवर एंट्री, अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने के बाद यू शुड एग्जिट एट कॉस्ट। वन थिंग, आपका स्टॉप एग्जिट एंट्री के बाद अगर स्टॉक 5% बढ़ गया, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस डायरेक्टली एंट्री पॉइंट पे लगाना है। यू शुड नॉट ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस, यू शुड ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस एट एंट्री पॉइंट। सो इधर यू विल टेक एग्जिट एट एंट्री। हाँ, अगर नहीं हुआ इसके बाद, ये नहीं आया एंड स्टॉक डायरेक्टली गॉन अप, सो देयर इज टू पॉसिबिलिटी। कोई भी स्टॉक वर्टिकली नहीं देता, स्टॉक का नेचर है, द मार्केट का नेचर है। द मार्केट नेचर इज व्हाट, इट विल गो इन स्विंग्स, इन द फॉर्म ऑफ स्विंग। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो।
The market nature is to work in the swing mode. What you expect that the stock should go vertically? Vertical movements of rare. Rare movement are only catched rarely. Rare movement are only catched rarely. Likewise, understand IRIDA. IRIDA IPO was a miracle. Like thing. Understand this thing. Day one, at 45, 55, I have given Btst, and we have ended up getting a gain of 8 to 10% in one day. After that, you can see it is getting contracting, and even I have given entry at this point. After that, you can see it has given massive 50 to 60% move. But the move was rare. Don't expect the move should be like this. 95% move in just 5 days. The move. The problem with our system is quite well. Our system indicated that you can get a big returns, but the problem was that जैसे ये 70 के पास आया, इसे एक ही दिन का मुंह आने के बाद 20% का दैट मेनी पीपल वेर टेक्सटिंग मी इन द ग्रुप, सर क्या करूं, सर क्या करूं? तो ऑब्वियसली मेरा जवाब क्या होगा? एग्जिट 50%, 30%, 20% और फॉलो द रूल्स. तो आपको आज हम एग्जिट सिखाने वाले हैं. आई विल टीच यू व्हाट शुड द योर आइडियल सिचुएशन. सो वंस आवर एंट्री पॉइंट फॉर दिस वाज हियर, मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी. जिनको याद है उनको उनको बता देता हूँ. एंटर पॉइंट वाज हियर. Ideally, you should use this one indicator named 821 EMA and SMA 5200. Screenshot this or I will share the link. I can't share the link. You can take screenshot or you can search in the trading view. 8 EMA is the best way to take vertical stock exits. देखो, आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली थी तो यू डोंट हैव टू वरी. जब तक ये जा रहा है ऊपर जाने दो. देयर आर टू मेथड्स टू एग्जिट. दो एग्जिट के मेथड बता रहा हूं, अच्छी तरह से सुनो. आई एम टेलिंग यू टू एग्जिट मेथड्स. लिसन केयरफुली. Let me see 1 minute. Is it recording? Yes, it's recording. Oh, good. See, there are two methods. One method is candle by candle. Our entry candle, we take an entry and it is suddenly busted 5 to 6% or more than 4%. So directly you put stop loss to entry point. And after that, if the stock is going vertically, then what you can do, you can uh, trail your stop loss by candle method. First thing, your stop loss would be this candle low. Second stop loss after this candle, the stop loss would be here. अब ये कैंडल भी बन गई है तो इसके नीचे लेके आओ. ओके, यू कैन पुट स्टॉप लॉस टू दिस लो. अब उसके बाद आफ्टर दिस कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट स्टॉप लॉस टू हियर. इसके बाद कौन सी कैंडल हो? ये रेड कैंडल हुई. तो आप इस रेड कैंडल के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला देते हो. उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन आपका स्टॉप लॉस हिट. आपने कितना परसेंट प्रॉफिट लेके गए आप? हाउ मच प्रॉफिट यू हैव मेड? सी दिस, यू हैव मेड 74% रिटर्न, द मैक्सिमम वन कुड मेक with the candle by candle method. But it is a rare situation. Many times this situation may not occur. Many times the stock may not move in the candle by candle method. So what should you do? You should follow ATMA. This red line is ATMA. Once a stock closes below it, here it is closed below it. So you could exit here. You could exit here. And you are taking 62% return still. 60 to 60% return. सो अंडरस्टैंड, अगर स्टॉक का नेचर ऊपर जाना है तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा. आफ्टर एनी बिग मूव, एक बड़ा मूव आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आएगा. कंसोलिडेशन इट इज कंसोलिडेटिंग ओल्ड बायर्स. जहां पर those people who bought this stock at here, they are exiting here. Understand, this is simple thing. इसके बाद नए लोग जुड़ जाएंगे. नए लोग यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो गया. हमने यहाँ पे एंट्री ले ली. नए लोग यहाँ पे जुड़ गए, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली. बीटीएसटी दिया था, उसको कन्वर्ट करने को कहा था. उसके बाद एवरी डे इट इज गोइंग अप. यहाँ पे एटीएमए का रूल लगा लो, कैंडल बाय कैंडल का रूल लगा लो. यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट आया था, उसके बाद कैंडल बाय कैंडल के रूल के अकॉर्डिंग एग्जिट हमारा यहाँ पे ट्रिगर हो गया.
कैंडल बाय कैंडल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैंने बोला आपको 8 EMA तो है आपके साथ, 8 EMA यहाँ पे एग्जिट हो गया। अगर आप उससे भी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन होल्ड एंड होल्ड विथ पावर पॉइंट, पावर पावर पिवोट लेवल्स। पावर लेवल्स क्या होते हैं, जहां कहीं पर भी एक बड़ा सेलर आता है वैल्यूम के साथ और उसको मार्केट ट्रैप करता है बाइंग के साथ। जैसे कि यहाँ पे एक सेलर था, ये यहाँ पे एक सेलर था, हाई वैल्यूम सेलर, हाई वैल्यूम सेलर, दिस बोथ सेलर हैज बीन ट्रैप्ड इन दिस कैंडल, सो दिस इज अ पावर लेवल, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक हाई वैल्यूम के साथ सेलिंग आई थी, देखो रिजल्ट के बाद, बट उसके अगले दिन ही इसको भी इंगल्फ कर लिया गया है, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो सकता है, नहीं तो जो जो इंगल्फ थी इस कैंडल का लो होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर भी हेवी वैल्यूम के साथ सेलिंग आई थी, उसका उसका भी इनगल्फ कर लिया गया। तो इनगल्फ कौन सी कैंडल ने किया, इस कैंडल ने किया। तो आपको ये कैंडल के लो, या तो जो रेड कैंडल थी इसका लो, आप इसी को स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हो। तो अभी अगर आप इन्वेस्टर होल्डिंग कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे एक बाय कर लिया जाएगा और इसमें दोबारा एक रिवर्सल आएगा। So there is a high possibility again it will bought here and it will be a reversal here. This is how swing rules works. This is how exit works. I am teaching you exit methods. Please hold and listen carefully. Watch this video twice, thrice. Hope you are getting my point. स्टॉप लॉस के रूल्स बता दिए, स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करने का, कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे एग्जिट करने का उसका रूल्स बता दिया, कैंडल बाय कैंडल मेथड बता दी, पावर पावर पिवोट बता दिया, पावर लेवल बता दिया, पावर लेवल क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैसे किया जाए। ओके, उसके बाद ईएमआई से भी मैंने ट्रेल करने का बता दिया। टारगेट मत पूछो, जितना बड़ा प्रॉफिट मिले उतना प्रॉफिट लेके जाओ। व्हाई यू आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल गाइस, दैट आपको आपको हर 2 दिन में स्टॉक बदलना है। अरे स्टॉक मत बदलो, एक ही स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा देर होल्ड करो, बड़ा रिटर्न निकाल के जाओ। अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड ऑलवेज फॉलो रूल्स। अभी इसके बाद मुझे कोई भी, नो पर्सन शुड आस्क मी टारगेट। I have given you exit rules and no person should ask me for exit. आप जब भी exit 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 बोलते हो उस टाइम पे, whenever you say sir should we exit, that time my mind also changes and I give exit. That happened with Intel convenience. सिंपल पोजिशन था, मेरा रूल तो सिंपल था, मुझे यहाँ पावर पॉइंट भी मिल गया था। देखो मैंने एंट्री यहाँ पे दी थी, इसके ऊपर जाने के बाद एंट्री लेनी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम व्हाट हैपन, द स्टॉक ओपन एंड उसके बाद तुरंत ही चला गया। आफ्टर उसके बाद 2 दिन स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, हमारी एंट्री के बाद 2 दिन नहीं दिया, 1 दिन 2 दिन। ये 2 कैंडल रेड देख के आप तो इतना घबरा गए, क्या बोलो आपको। वेन यू आर फियर्ड, मार्केट विल यूज योर फियर एज अ वेपन। दैट्स व्हाई होप आई हैव गिवन स्टॉप लॉस फॉर दिस स्क्रिप्ट एज 99। आपको याद है तो आप जाके देख लो, क्या 99 हिट हुआ था, नहीं, बट आई गॉट मेनी क्वेश्चंस दैट इंटेल कन्वीनियंस नॉट वर्किंग, शुड वी एग्जिट। इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स यू कैन एग्जिट फ्रॉम आवर ग्रुप एंड काइंडली प्लीज डोंट आस्क मी many times same question. After these 2 days the stock has not worked, third day whenever it has came to the cost, I have given you should exit now the stock at cost. Only those people, only because of those people, those who were asking frequently, they are lacking confidence in themselves. उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इन वो नए ट्रेडर है, नए ट्रेडर हो तो सीख लो, डरना नहीं है। अगर इधर स्टॉप लॉस हिट, इधर टारगेट हिट, रूल्स को सही से फॉलो करो। इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स यू विल नॉट मेक द रूल्स। इवन फ्रॉम यू आर नॉट फॉलोइंग ऑफ रूल्स, इट्स इम्पैक्टिंग होल कम्युनिटी, because once my mind made a decision of exit, it will cost to everyone. Hope you are getting my point. So that's why don't DM me irrelevant things. Only DM or message me for relevant things which are
practically relevant, and try to learn on weekends or weekdays, because you will not survive only by taking calls from anybody. You should always try to learn some basic things in the market. Market is nobody's. Nobody can teach you, or nobody can give you money by hand holding support. You have to work on some basic things in your life to get succeed at anything. You have to make an effort. If you are paying me, that now it's not my responsibility to take you with hand to hand entry days, hold days, exit days. It's not my responsibility. I am here that I have some knowledge, that I know the charts very well. I know the fundamentals. I have studied. I have been in the market for few years. I know, or I am getting the point that how the market is working. That's why I'm taking money from you to tell you that I think this stock may go up. But but I can't say anything because I'm not the god and I don't know. Market is unrealistic, unexpected behaviors. So that's why following rails only can say you, or only can make you rich, or only you can make money by following the rules. Follow rules, understand rules. If I have to take some example, IRM energy. Stock's nature is to go up or nature is to go down. Either it will go up or down. I have given in IRM energy entry at this point. After the next day, it suddenly fallen down. But I said that hold. After that, it has given a move. What should be our target? Our entry price was 480. 8% to 20% criteria has been filled. 8 to 20%. The move has came. But many people were asking, if you exit by the rules candle by candle method, then your exit has been triggered at 543. If you are exiting with 8 EMA rules, your exit has been triggered here. Even if you exit at 8 EMA rule, you are getting near about 8% returns. 8% रिटर्न तो आप लेके चल रहे हो, जो कि स्विंग का नेचर ही है. बट अंडरस्टैंड दिस, ये स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया, बट उसके बाद कितना बड़ा कंसोलिडेशन था. आफ्टर दैट इट देयर वाज अ कंसोलिडेशन ऑफ प्राइस एंड डेट रेंज. सो इसका जो सबसे हाईएस्ट मूव था, इसको आने के लिए 48 डेज लग गए. तो स्विंग में आपको रूल्स फॉलो करने हैं. अभी मैंने एग्जिट रूल्स बोल दिए हैं. कैंडल बाय कैंडल मेथड, ईएमए मेथड. अगर पोजिशनल जा रहे हो तो ये पीली वाली जो लाइन है ना, इट इज कॉल्ड एज 21 ईएमए, इसको फॉलो करो. अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो 200 डीएमए और 50 डीएमए को फॉलो करो. ये जो चल रही है ना नीली वाली लाइन, इसको फॉलो करो. इसको अभी तक टच नहीं किया. अभी आईआरएम एनर्जी में क्या हो रहा है? आईआरएम एनर्जी टुमारो विल ब्लास्ट. ये भी है हमारी लिस्ट में. एक डबल होने वाला स्टॉक है, मनी डबल स्टॉक, नोवा एग्री. देखो इस स्टॉक का भी क्या हुआ था. द स्टॉक हैज गिवन वर्टिकल 40% मूव. उसके बाद क्या हुआ? अभी ये 15% गिर चुका है. कल कल ये नीचे से लोअर सर्किट से अपर सर्किट जाएगा और रिवर्स लाएगा. तो इसके ऊपर फोकस करेंगे. तो नेक्स्ट वीक की जो हमारे पिक्स है उसमें टॉप प्रायोरिटी पे नोवा एग्रीटेक है. वन पिक नोवा एग्रीटेक. नोवा एग्रीटेक इज वन पिक एंड आई एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू डबल एट वेरी फास्टर पेस. फास्ट डबल होगा. जैसे ही इसका ये जो रेड कैंडल दिख रही है जिसमें सबसे ज्यादा वाला है, इसका हाई क्रॉस होने के बाद आपको क्वांटिटी दुगनी करनी है. You have to multiply your quantity. One thing is there, and this EPX stock is also on my radar. The low of this stock has been made, and it will go vertically or it may make a W pattern. So I'm expecting this to reverse. Entry point and review at above 200 level, but we will less likely to take the entry. Again, we will enter to Jyoti CNC.
See, Jyoti candle by candle method still, if we see, it is a likely inside candle, not inside candle. So right stop loss should be here if you entered here. And what I am seeing that again some buying is happening here. So expected to go vertically upwards to 780 to 750 levels. It is expected. But other one more thing can happen. One green candle again consolidation and again may go up. So consolidation is a part of holding. Consolidation is holding is quite painful because many stock don't perform, take time, and you have limited capital. I know. So that's why use this method, candle by candle or 8 EMA for better exit and better capital shifting. Okay. Hope you are getting my point. I am speaking for I will again take one more session because this is not enough. You will uh, these rules will be applied this week, and the next week we will see how this is performing and how it's going. After that, we will again take a session and ask for your doubts. Hope you are getting my point. Now you can ask the questions. You can unmute yourself and you can ask the questions. Yeah, some part is remaining. I will tell. Before that, it's question time. Nobody has question. Did I explain it very well? I hope it's quite good that if there are no questions. I feel that I have explained very well. So let's go to how to maximize your gains. Maximizing gains is okay. आपको हाँ okay. So what's your opinion on 19 Feb fall? 19 Feb fall? 1924 fall? I didn't understand the questions. Kindly, can you elaborate the question, PB? Can you elaborate it? Okay. Before that, and just see how you can maximize your gains. What is the problem is that you are following couple of groups, not only mine group, you are following 10 groups. You are following some Twitter handles, you are following some pre group, you are following some paid group. So don't muggle it up. Just follow one or two by heart. If you don't see the result, exit with them, follow other. If you are not getting any result by following anyone, build your own system. Build your own system, build your own rules, and don't depend on anyone. Trade independently. If you are earning money with my analysis, then follow me blindly. Don't follow that blindly. Follow my rules blindly. If you follow my setup and my rules, I am 100% damn sure that you will be getting the rewards. Okay. So, so what is the main culprit? Why many people are not able to make gains in the market? The most important thing, no one is want to book a loss. Let me explain it on chart. See what happened to our one of entry. Hope you everyone remembers EMS. First entry was given here. After that 5 days consolidation, it has given a massive move. Many people have exited here. Many have exited here. Okay. After that, we have taken entry at here. No, no. Oh, as per I remember. I think we have taken entry at here. Entry one upper circuit, then again it has came down. But the consolidation period was quite heavy.
As per the rules, stop loss hit here. As per the rules, stop loss hit here. But many people holding, holding. Eventually, at this point, they sold. At this point, they sold before the rally, and it has gone up. So whenever you decide to hold after stop loss, after certain stop loss, then you decided that your capital will be utilized for this, and your emotions will be kept. Your capital is utilized here, your capital is stuck here, and you will not able to make return on that capital until that time. यही तो गलत हो रहा है ना ऋषभ जी। आपने टीसीआई एग्जिट नहीं किया, आपको उसकी सजा मिलेगी। व्हाट्स द पनिशमेंट फॉर दैट? यू आर गोइंग टू अ लॉन्ग टर्म होल्डर। देखो, टीसीआई एंट्री यहाँ पे दी हमने, इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी, स्टॉप लॉस 945 का था, आपने एग्जिट नहीं किया। अभी क्या होगा, आपको मोर देन लॉन्गर यूज करेगा, उतने टाइम तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। और आप क्या करोगे, टीसीआई को एंट्री पॉइंट पे आने तक एग्जिट कर लोगे। एंट्री तक आएगा, इसका एग्जिट कर लेगा। ये एंट्री तक आने के लिए 10 दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा, इतने दिन आपका कैपिटल स्टॉक होगा। अगर आपने रूल्स फॉलो किए होते, आपने यहीं पे एग्जिट हो गए थे, तब क्या होता, आपका वही कैपिटल दूसरे ट्रेड के लिए यूज होता और आप उसके उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो गेन्स बनाते। यहाँ पे दो आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं। वन इज प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट जनरेटिंग रिटर्न ऑन योर दैट दैट परसेंटेज ऑफ कैपिटल। लाइकली 20% ऑफ कैपिटल आपका यहाँ पे स्टॉप हो गया। आप अगले दिन बीटीएसटी नहीं ले पाओगे, आप स्विंग ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज लॉस्ट एज अपॉर्चुनिटी। नॉट फॉलोइंग रूल्स इज हार्मफुल। नॉट फॉलोइंग रूल्स इज हार्मफुल। सुमन जी, आपने भी गलती की। पक्का पक्का ठीक है, पक्का तो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ था। अलग बात थी कि पक्का आई वाज हैविंग कन्विक्शन। मैंने उसको बोला कि भाई आप ये आप क्या कर सकते हो आप। नो, इट इज नॉट अ डिस्कशन। जियोस फाइनेंस हेमिस्फीयर, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा आज। दिस इज नॉट अ डिस्कशन लेक्चर। ये लेक्चर डिस्कशन के लिए नहीं है। ये लेक्चर आपको समझाने के लिए। डिस्कशन के लेक्चर अलग होंगे, ये नहीं है। This is to tell you the rules. If you don't abide the rules, you will end up having this mistake. आपके दो नुकसान है अगर रूल नहीं फॉलो करोगे। एक तो कैपिटल भी स्टॉक होगा, और उतने दिन तक आपके कैपिटल पर रिटर्न भी नहीं मिलेगा, और आप अगले ट्रेड भी नहीं ले पाओगे। सो फॉलो रूल्स। छोटा लॉस कभी भी अच्छा लॉस है बड़े लॉस से, बट लॉस नहीं लेना इज द बिगेस्ट लॉस। आपको लॉस ही नहीं बुक करना होगा। आप अगर छोटा लॉस नहीं बुक करना चाहते तो आप बड़ा लॉस बुक करोगे। इफ यू डोंट वांट टू बुक द स्मॉल लॉस, यू विल एंड अप हैविंग बिगर लॉसेस। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपने छोटा लॉस नहीं बुक किया, आपने छोटा स्टॉप लॉस के साथ नहीं गए, तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा लॉस लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। आपको दो कॉस्ट होंगे, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैपिटल भी हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, आप रिटर्न भी नहीं कमा पाओगे। और इस सब के अलावा आपको मेंटल स्ट्रेस भी आएगा। मेंटल स्ट्रेस इज वेरी बैड स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के कारण आप जो स्टॉक प्रॉफिट में है, आपको आप वो एग्जिट कर दोगे, और जो स्टॉक लॉस में आपको वो होल्ड करके रखोगे। उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट वाला स्टॉक है वो ऊपर का ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट वाला स्टॉक जो ऊपर जा रहा है ना, आपको उसको ही ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करना है, क्योंकि यू शुड राइड योर विनर्स। व्हाट इज द रूल? राइड योर विनर। राइड योर विनर। कट योर लूजर शॉर्ट। लूजर्स को जल्द ही कट कर लेना है, विनर को ही राइड करना है। दैट इज द सिंपल रूल टू मैक्सिमाइज योर गेन्स। रूल्स फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, सो this is not, our group is not for you. You should exit from our group, and you should try for self trading, or you should try, but understand rules follow करो। इसके बाद अगेन मैं एक सेशन नहीं लिया आपको, मेरे बेसिक यहाँ से फ्रॉम हेयर एंड ऑनवर्ड्स आई विल टेक मल्टीपल सेशंस एवरी मंथ। देयर विल बी फुल कंपलसरी सेशन। अगर मैंने नहीं लिया, तब आप मुझे मैसेज करो, आप मुझसे पूछो कि सर आप सेशन क्यों नहीं ले रहे। I will definitely take 4 sessions to teach you and to make you better.
to make you understand the basic rules of market. क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर आप मनी पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप मुझे कैसा दोगे। अगर आप रेगुलरली पैसा कमाओगे तो यू कैन रेगुलरली पे मी फीस एंड यू कैन कंटिन्यू आवर मेंबरशिप। उसके लिए आपको तो आना चाहिए ना, आपको रेगुलर पैसा कमाना चाहिए ना। तो मैंने बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि दे आर नॉट अर्निंग द मनी फ्रॉम द मार्केट। क्यों नहीं अर्न कर रहे? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। आप लॉस नहीं लेना चाहते। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो, मैसिव फॉल मार्केट में आ रहा है या आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। देयर इज अ ट्रेंड करंटली इन द मार्केट। अच्छा हुआ मैंने कल बहुत ज्यादातर एग्जिट दे दिए। क्यों दिए एग्जिट मालूम है क्या? आपको पता नहीं होगा, मेरे सिस्टम ने इंडिकेशन दे दिया कि एग्जिट दे दो। सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा तो आई विल बी रॉन्ग। वाई? 8 EMA के नीचे स्टॉक स्मॉल कैप इंडेक्स चला गया। देखो 8 EMA के नीचे एस्टेट चला गया, तो उसी वजह से मुझे एग्जिट देना पड़ा। सिस्टम ने बोला कि एक बड़ा फॉल आने वाला है। बड़ा फॉल यहां तक फॉल आ सकता है, इसके पास हमने एंट्री लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो सिस्टम ने बोला तो हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कल मैंने कहीं एग्जिट नहीं दी होते तो अगर देखो, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ज्यादा गिरता है ना, तब आप ही मुझे बोलोगे कि सर यू आर राइट। क्या हो सकता है अभी कल कल एक डोजी बनेगा, डोजी बनेगा, कुछ स्टॉक्स में मूव आएगा, कुछ स्टॉक्स में मूव नहीं आएगा, उसके बाद अगेन फॉल कंटिन्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वी आर टेस्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हम उसको टेस्ट करने वाले हैं। ये जो नीचे के साइड से मूविंग एवरेजेस जा रहे हैं ना, इसको टेस्ट करने वाले हैं। देखो, इसको वी मे एंड अप टेस्टिंग यार, या तो हम 21 EMA तक तो जाएंगे। देखो, कभी भी बड़ा फॉल आने के बाद एक बड़ी बाइंग आती ही है। बड़ी फॉल बाइंग। अच्छा हुआ हमने मॉर्निंग में 9-9:30 को एग्जिट कर लिया, क्योंकि अभी हम चीपर वे में कल परसों स्टॉक ले सकते हैं। अगर हमने कल एग्जिट नहीं किया होता तो हमारा लॉस बहुत बढ़ जाता। और कुछ स्टॉक हमारे रिकवरिंग नहीं होते। एक दो स्टॉक रिकवर हो सकते थे 5-6%। पर सारे स्टॉक तो नहीं रिकवर होंगे, तब क्या करोगे आप फिर? कुछ स्टॉक हमारे कैपिटल स्टक कर हो जाएंगे और हमें उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। लगभग एक एक मंथ होल्ड करना पड़ेगा। दैट्स वाई आज मैंने जैसे ही मैंने देखा कि मार्केट में एक सीलिंग आ रही है, मैंने तुरंत ही एग्जिट दे दिया। एंड आई अगेन बिलीव दैट माई एग्जिट इज राइट, because I saved you from long term holding. I saved you for making mistakes. मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करेगा। और अंडरस्टैंड, अभी बजट का सीजन भी चला गया। अभी कुछ क्यूज नहीं है मार्केट में। यूएस का मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। थोड़ी ना थोड़ी तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी है। मार्च एंडिंग भी आ रहा है, इलेक्शन भी आ रहा है, प्री इलेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कुछ लोग बोल रहे प्री इलेक्शन रैली आएंगे, रैली नहीं आएगी अभी। अभी खत्म हो गया। रेलवे के स्टॉक के रिजल्ट भी आ रहे हैं, सारे रेलवे के स्टॉक के रिजल्ट बुरे आ रहे हैं। रैली वैली कुछ नहीं आएगा अभी। करेक्शन आएगा, करेक्शन ज्यादा नहीं होगा, बड़ा होगा, नहीं पता मुझे। चार्ट में जब भी एंट्री मिलेगी मैं दे दूंगा आपको। आपको उसकी चिंता मत करो। वी विल आई विल बी हेयर, डोंट वरी। आई होप दिस सेशन हैज हेल्प यू अ लॉट। इफ नॉट, Yes, sir. ओके, ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट वंस अगेन। ओके, या, ओके।